सीएट ने माफ कीजिएगा Q3 के नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। कामकाजी मुनाफे और मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिला है। कंपनी के नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के CFO कुमार सुबैया। मिस्टर सुबैया, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ET नाउ स्वदेश पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे सर ये समझेंगे कि ये जो घाटे का फिगर आपने रिपोर्ट किया है, क्या इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो इन्फ्लेशन, ये कमोडिटीज का इन्फ्लेशन? क्योंकि हमने देखा कि जो की रॉ मटेरियल आपके सेक्टर के लिए है वो क्रूड है, वो नेचुरल रबर है, आप ये समझाइए। और दूसरा चीज ये बताइए कि क्या आपने आप प्राइसेस कुछ बढ़ाए हैं अपने प्रोडक्ट्स के? I think for industry, tire industry, one of the challenges that we are facing is a continuous increase in commodity costs. So this is the sixth quarter in succession. Raw material costs have moved up, okay, and moved up in not small measure, but it's significant. Okay, so we have seen over 40% increase in the raw material costs over a last 15 months period. Okay, and well, in a tire industry, about 65% of the turnover is raw material cost. So when the raw material costs increase this magnitude, okay, it has some impact on margins. And we have been mitigating the raw material cost increase through price increase. But there is a gap or there is a lag between the time that the raw material costs increase and the time which we are able to increase our prices. So during last quarter, the raw material prices went up by a little over 4%. Okay, and we managed to increase our prices in the range of around 2.5% during the course of the quarter at different points in time. So leading to gap between the increase in input cost versus and the realization. So that's the main contributor for reporting lower margins and small amount of losses also in Q3. नमस्कार सुबैया जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ जी। आपने बताया कि किस तरीके से रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पर आपसे थोड़ा डिमांड पे जानना चाहेंगे कि डिमांड किस तरीके से पैन आउट हो रही है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं। किस तरह की डिमांड आप देख रहे हैं रिप्लेसमेंट OEMs और एक्सपोर्ट मार्केट में, और साथ ही जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन आप अभी बता रहे हैं जो तीसरी तिमाही में आपके मार्जिन्स को भी हिट किया है, आगे चल के आप कैसे देख रहे हैं कि वो ट्रेंड किस तरीके से पैन आउट होगा? See, broadly, we have three categories of customers broadly. Okay, one, as you mentioned, original equipment manufacturers. Second is the replacement market. Third is the international business. The pricing power varies depending on the segment that we play. In case of original equipment manufacturers, for large number of categories, we are able to adjust our prices on a quarterly basis with a 3-month lag to the extent of any movement in raw material costs, both ways, both upwards and downwards. So that happens, and therefore our ability to recover that cost from the OEMs is generally there. As far as the replacement is concerned, also depends on some categories. Okay, and if raw material prices increase in one particular quarter, you follow it up with a price increase over the next 3 months' time. But when it happens consistently, when the environment becomes little weak from a demand standpoint, okay, then it takes a little longer. One, and number two, it's a very competitive market. Okay, and we are not market leaders in all the categories. In some categories, we are a market. We are among top two. So there, our ability to influence the prices is better. In categories where we are not among top two, okay, and our ability to take the prices depends on what is happening overall in the marketplace. So therefore, there is a lag in the replacement side overall to the extent of anywhere between 4 and 6 months in different categories. So that is where the margin gap is. In case of export business, we have generally managed to increase our prices over a period of time. I know what we need to cover is only the impact of increase in raw material in Q3, which I think will happen in Q4. So it varies. It's a mixed bag. It varies depending on the customers. It varies depending on our position with respect to certain categories in the marketplace.
ठीक है सर, परफेक्ट। बिल्कुल आपने विस्तार से समझा दिया कि आपकी पोजीशनिंग कैसी है, चैलेंजेस कैसे हैं और आगे किस तरह से इंडस्ट्री के डायनामिक्स पैन आउट होते हुए यहाँ से दिखेंगे। सुबैया सर, एक आखिरी क्वेश्चन जो हम हर कॉर्पोरेट से पूछ रहे हैं, और देखिए बजट यहाँ से 10-11 दिन बमुश्किल दूर रह गया है, आपके सेक्टर की उम्मीदें क्या हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम टायर इंडस्ट्री की बात करें, आप तो क्या आपकी डिमांड्स हैं वित्त मंत्री से? There are two things. If economic activity in India picks up, generally it has a positive rub-off effect on the automobile sector and also on tire industry. So any stimulus to increase the economic activity would certainly help for our sector. The second area where we would expect some support is that, any effort to moderate the inflation. Commodity prices have gone up, okay, and if there is a way to revisit the duties on raw materials that come into India, whether in anti-dumping duty or safeguard duty or basic customs duty, would go a long way in improving or in bringing down our costs. Okay, so there are many raw materials that go into the manufacture of tires, attract a higher rate of duty. So compared to the rate of duty at which tires are subject to. So therefore, there's an inverter duty structure applicable in a tire industry. So any relief there would help. And today, tires attract a highest rate of GST, around 28% or so. So it is not a budget-driven change. Any review there to bring down the GST rate would also help the tire industry. So these are the things that from tire industry or from CEAT we would look forward to in the coming budget. तो ये थे सीएट लिमिटेड के मैनेजमेंट कुमार सुबैया जी, जो कि हमसे अब बात कर रहे थे कि किस तरीके के नतीजे देखने को मिले हैं, क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट किए हैं। आने वाले समय में जो कच्चे माल की लागत है वो और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, पर बजट में इनको उम्मीद है कि इस बार टायर पे जीएसटी रेट कट अगर कोई देखने को मिला तो वो एक पॉजिटिव होगा, जिसको लेकर वो होपफुल हैं। पर चलिए